Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this short video would explain you the basic concept of best first search, and which we have already discussed in our earlier discussion, that in order to add intelligence to your search strategies, you have to include the heuristic cost in your search strategies. So your total cost, F, is primarily an addition of the path cost, which is G, and that is the cost of that you have incurred in reaching from your start node to your present node. This is what is known as the G cost. And then you have the heuristic cost, which is the estimate from your present node your uh, to your goal node. So H is an estimate of your that you will need to incur in order to reach your goal node from your present node, and G is your path cost. So what happens in best first search is that the path cost is actually not considered. So your F cost is equal to your H cost. So H cost is only considered. That means that if you are at a particular node S, and you have a goal node which is G, then H of S would be an estimate of reaching your goal node from your S node. That would be an estimate of this. Whereas if you incorporate the path cost, then let's say you started from some node here, and from this start node you reach your node S, and the cost which you have incurred while reaching your start node to your S node is what you call as your G cost. So in case of the best first search, if you are calculating the cost of your search, then that cost of search is always equal to your heuristic search. Okay, and that's why it's actually called the greedy search also. So this G fact is actually neglected in this particular scenario. So if you start from, let's say, node number 1, and you want to reach node number 3, and intermediate node is, let's say, node 2, then and if the cost of reaching from 1 to 2 is, let's say, 1, and the cost of reaching 2 to 3 is, let's say, 4, then the total path cost from 1 to 3 will be 5. Okay, and this would only be incurred when you reach 3. Okay, so if you start from 1 and you reach 2, then your path cost is 1. Okay, the heuristic cost is always calculated when you keep uh, your goal node in mind. So if you are at 1, the heuristic cost at 1 would be the cost that you might incur in reaching 3, and that's an estimate, because you are at present you are at 1. Therefore you can only estimate that how much cost will you incur in future in reaching goal number 3, and that's just an estimate. Similarly, the heuristic cost being at 2 is the cost that you will incur from 2 to 3. So that's again an estimate, because if you are at 2, then you have only covered one node. So you have moved from 1 to 2, and you have to move from 2 to 3 in future. So 2 to 3 की जो cost होगी, that will be the heuristic cost, और 1 से 2 तक जो आपने already incur की है, that is your path cost, which is your G cost. To calculate the node which you want to traverse in best first search, you will always consider your heuristic cost. जो path cost आप incur कर चुके हैं, उसको आप neglect कर देते हैं, right? So let's say कि यहाँ पे हमारे पास जो cost आती है, let's assume कि 1 से 3 तक जो आपकी heuristic cost है, let's say कि that is let's say 10, और 2 से 3 तक heuristic cost आपकी let's say 8 है. So in case of best first search, f of 1 will be 10 and f of 2 will be 8. ठीक है, क्योंकि आपने पाथ कॉस्ट निग्लेक्ट कर दी है, इसलिए आप पाथ कॉस्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, if I don't neglect the path cost and if I add the path cost, then f of 1 will still be 10, क्योंकि
दिस इज योर स्टार्ट नोड और आपने कोई पाथ अभी ट्रेवर्स नहीं किया. सो देयरफॉर योर एफ कॉस्ट एफ एट 1 विल बी 10 और यहाँ पे जी आपकी 0 होगी. वेयर एज एफ एट 2 will be 1, the path cost that you have incurred, plus the future cost, which is 8 that you'll incur. And so that means that this will be 1 plus 8. 1 plus 8 is 9. So F cost at 2 is 9. F cost at 1 is 10. अच्छा, अगर मैं निग्लेक्ट कर देता हूं अपनी पाथ कॉस्ट को, तो देन एफ कॉस्ट एट 2 विल बी 8. क्यों? आप इस 1 को आपने निग्लेक्ट कर दी. Okay, so this is how you calculate your cost for best first search. Remember, best first search में आपने G factor को या G cost को आपने neglect कर देना है. And if you don't neglect G cost, that is your path cost, then it's not best first search. It becomes A star search. So first I'll just show you an example of the best first search here, and for that you will have to come up with some sort of a heuristic. So if it is a navigational problem, let's say that you are moving from one city to another city, and therefore let's say आपने लाहौर मूव करना है from Gujarat, and intermediately there are two paths here. आप गुजरात से सिटी वाई पे जा सकते हैं, वहाँ से सिटी ए पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप लाहौर मूव कर सकते हैं. सिमिलरली गुजरात से आप सिटी एक्स मूव करें और वहाँ से सिटी ए मूव करें और वहाँ से आप लाहौर मूव करें. And these lines here are representing the road and the road distances. So you know the road distances क्या हैं आपके पास. So road distances will act as your path cost. It will not be an heuristic cost. Heuristic क्या होगा? This would be an estimate of your path cost that you might incur. So Gujarat से Y तक, if you are at present, you are at let's say, okay, so the graph is showing the other way around. So let's say मैं उल्टा शुरू करता हूँ. तो let's say कि मैं लाहौर से start करता हूँ. तो लाहौर is my start node और मैंने गुजरात पहुंचना. तो लाहौर से गुजरात तक का जो path cost होगी, that would be the cost that you will incur along this path. तो अगर मैं लाहौर से A पे move करता हूँ, so this distance, actual distance जो मैंने लाहौर से A तक move किया है, that will be my path cost. लेकिन लाहौर से अगर मैं ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आई विल एक्चुअली कंसिडर माय गोल नोड, एंड माय गोल नोड इज गुजरात. सो आई कैन ऑलवेज हैव एन एस्टिमेट फ्रॉम लाहौर टू गुजरात, क्योंकि मैं लाहौर से गुजरात अभी मैंने कंप्लीटली ट्रेवल नहीं किया. आई एम, लेट्स से एट प्रेजेंट आई एम जस्ट एट लाहौर. तो लाहौर से मैंने स्टार्ट लेना है. सो बिफोर आई स्टार्ट मैं अपनी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट कर सकता हूँ. और heuristic cost क्या होगी? That would be an estimate of the actual distance between Lahore and Gujarat. So the actual distance between Lahore and Gujarat, an estimate of that could be a straight line distance. So crow fly distance आप उसको कह सकते हैं, या straight line distance कह सकते हैं. मेरे पास मैप है, मैप के ऊपर मेरे पास actual road distances नहीं दिए हुए, लेकिन I have a scale. तो उस स्केल को यूज करते हुए मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ फ्रॉम लाहौर टू गुजरात, और उस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले लेता हूँ. सो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वुड ऑलवेज बी आइदर लेस देन और एट मैक्स इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस. ठीक है. सिमिलरली अब मैं लाहौर पे हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कैलकुलेट कर ली लाहौर से गुजरात तक. लेकिन पाथ कॉस्ट क्या है? क्योंकि लाहौर से मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, लाहौर इज माई स्टार्ट नोड, तो लाहौर तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो तो कोई नहीं है. तो देयरफॉर जी वैल्यू इस केस के अंदर लाहौर के अंदर 0 होगी, लेकिन ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होगी जो होगी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम लाहौर टू गुजरात. सो लेट्स से कि मैं लाहौर से सिटी ए तक मूव करता हूँ. लाहौर से सिटी ए तक जब मैं मूव करता हूँ, तो ए की जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट होगी, क्योंकि मेरा ह्यूरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो एस्टिमेट करूंगा फ्रॉम सिटी ए टू गुजरात, and that would be my heuristic cost, right? That will be my heuristic cost. अच्छा, path cost क्या होगी? A से स्टार्ट नोड तक का एक्चुअल डिस्टेंस. सो A से स्टार्ट नोड तक का एक्चुअल डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया, तो ये मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस मेरे पास आ चुका होगा. तो जो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड A सिटी विल बी G, और जो एस्टिमेट है A से गुजरात तक का, वो मेरा ह्यूरिस्टिक होगा. तो
path cost always takes into consideration the start node, whereas heuristic cost always takes into consideration the goal node. So goal node तक का जो distance है वो futuristic है, और start node तक का जो distance है वो आपने already traverse कर लिया हुआ है, so therefore this would be the actual cost. So this is primarily the difference between G of n and H of n. So G of A will be the actual distance from Lahore to A, always with respect to the start node. So G आप हमेशा with respect to the start node calculate करेंगे, और H आप हमेशा calculate करेंगे with respect to your goal node. And H तक का जो distance है that would always be a heuristic based distance. So that means that it would always be an estimate, and the total cost would be the addition of the two. अच्छा, अगर मैं actual path cost यानी with respect to the start अगर मैं neglect कर देता हूँ, then it becomes best first search. और अगर मैं include कर लेता हूँ in my total F cost, that becomes A star, right? So straight line distance is with respect to my goal. So heuristic cost of H would be the straight line distance between Y. It will be the straight line distance between Y and Gujarat. And similarly, the heuristic cost of x will be the straight line distance between x and Gujarat. ठीक है, और इनकी actual cost क्या होगी? G of y क्या होगा? G of y will be the actual distance from Lahore to y, and G of x क्या होगा? Actual distance from x and from Lahore to x, जो actual distance आपने already traverse कर लिया. तो if you are already present at x, तो आप G उसका बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और x से आप गुजरात तक का जितना डिस्टेंस होगा that will be your heuristic cost, which is represented by h in this particular scenario. Okay, so let's take this example. ये grid है, Manhattan distances आपने calculate करने हैं. This is your start node. So this is my start node. This here is my start node, right? So I'll say that this is my start node and this is my goal node. ठीक है, so this is my goal node. So there are possible, कितने possible paths हैं? एक path ये है कि मैं इधर से इस तरह से मूव करके यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, यहाँ से मैं फिर इस तरह से भी जा सकता हूँ. I can also move in this way. There are multiple ways I can actually move. एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इधर से इधर मूव कर जाऊँ, ठीक है. एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इधर से पहले इधर मूव करूँ फिर इधर मूव करूँ. दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. जब मैं ऑल द वे इधर आता हूँ तो यहाँ से आगे फिर मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो ये तमाम पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर मैं ह्यूरिस्टिक पहले डिटरमिन करूंगा, और उसके बाद आई विल कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ ईच सेल एंड देन यूज दैट ह्यूरिस्टिक कॉस्ट टू फाइंड आउट द पाथ. ठीक है जी. Okay, so the one of the heuristics that I can use is the Manhattan distance. Manhattan distance is when I neglect all the obstacles. So ये जो ग्रे में मैंने डिस्टेंस ये जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, these are the obstacles. So neglecting these obstacles, I can find out a straight line distance, horizontal and vertical, from any node. So start node से इसका जो Manhattan distance होगा, that will be 7. So there are 6 blocks horizontal and 1 block vertical. So 6 plus 1 will be 7. So Manhattan distance मैंने इसका calculate कर लिया of this particular start node, which is 7. Similarly, मैं इस नोड का भी heuristic distance calculate कर सकता हूँ, इसका भी heuristic distance calculate कर सकता हूँ, इन तमाम nodes का और इन तमाम cells का heuristic distance calculate कर सकता हूँ. तो let's say कि इसका heuristic distance क्या होगा? It would be horizontal and vertical distance from this. So इसमें से एक possibility ये है calculate करने की, और दूसरी possibility ये है calculate करने की. So इन दोनों में से जो भी छोटा distance होगा, that I can use as the heuristic cost. तो हर cell की, for example, अगर मैं इस cell पे हूँ, let's say if I'm here at this cell, so I can calculate the heuristic cost by calculating the horizontal and vertical distance from this particular node. तो यहाँ पे इसका मैं heuristic calculate कर सकता हूँ. Similarly, यहाँ से मैं इसका heuristic calculate कर सकता हूँ. तो हर node का मैं heuristic calculate कर सकता हूँ if I have this heuristic in mind. So दो मैंने अभी traversal नहीं किया, लेकिन मैं ह्यूरिस्टिक हर नोड का या हर सेल का कैलकुलेट कर सकता हूँ इस ग्रिड के ऊपर. सो लेट्स से कि मैं ये मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, और इसकी बेस के ऊपर ये मैंने ग्रिड के जितने भी सेल्स थे उन सेल्स का मैनहट्टन डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए.
एंड यू ऑब्वियसली, अगर मैं स्टार्ट नोट से गोल नोट पे पहुंच जाता हूं, अगर मैं गोल नोट पे आ जाता हूं, तो गोल नोट के ऊपर ह्यूरिस्टिक कॉस्ट उसकी जीरो होगी, बिकॉज मैनहट्टन डिस्टेंस ऑफ योर गोल नोट विद रिस्पेक्ट टू योर गोल नोट विल बी जीरो. सो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन. इसमें मैंने ट्रेवर्सल कॉस्ट नहीं डाली, ठीक है. नोड टू नोड जो मूव मैं कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट मैंने इसमें नहीं डाली, ठीक है. सो अब केस में क्या पॉसिबिलिटीज है? If I start from my start node, which is has the Manhattan cost of or the heuristic cost of 7, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ से इधर मूव कर जाऊँ, यहाँ से इधर मूव कर जाऊँ, या यहाँ से 8 पे मूव कर जाऊँ. Now the decision is based on the heuristic cost. So heuristic cost of moving to 6 obviously is less. heuristic cost जिस सेल की कम होगी मैं उस सेल की तरफ मूव कर जाऊंगा. सो मैं 8 की तरफ आने की बजाय इस नोड की इस सेल की तरफ आने की बजाय या मैं इस सेल की तरफ मूव करूंगा और या मैं इस सेल की तरफ मूव करूंगा, ठीक है. इन दोनों में से मैं एक सेल सेलेक्ट करूंगा, दोनों की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट सेम है. सो आई कैन रैंडमली सेलेक्ट, आई कैन सेलेक्ट दिस पाथ और आई कैन सेलेक्ट दिस पाथ. सपोज आई सेलेक्ट दिस पाथ, फर्ज करें कि मैं ये पाथ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब पहुंचता हूँ तो अब मेरे पास ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो 6 है. अब यहाँ पे पहुंचने के बाद मेरी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 6 है. यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है? यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एक नोड ऐसा सिलेक्ट करूं जिसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट लेट्स से 7 है, राइट. सो आई कैन सेलेक्ट दिस. दो यहाँ पे मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो 6 थी अभी तक, लेकिन यहाँ इस 6 पे पहुंचने के बाद या तो कॉस्ट इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं. मैं यहाँ से वापस इस स्टार्ट सेल पे मूव करता हूँ तो द कॉस्ट विल बी 7. यहाँ से मैं अगर ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो the cost is again 7. So I don't have any other option other than to take an unoptimal or a non-optimal step of moving towards a cell which is 7. अच्छा, इस सेल की जो टोटल कॉस्ट इस सेल की जो कॉस्ट है दैट इज 7 ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ओनली, ठीक है. और इस सेल की जो कॉस्ट है जिस पाथ को मैंने पहले छोड़ दिया था उसकी कॉस्ट है 8, राइट. So the path of the cost of moving my path, say instead of moving in this direction, I might say कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए था, मुझे जो है ना इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, तो I can't change my path at this present moment. The reason for that is कि heuristic cost on the second path is still greater than on the path which I have selected. So the path which I have selected, उस पे अभी मेरे पास जो नेक्स्ट सेल की जो कॉस्ट आ रही है वो 7 आ रही है, whereas the alternate cost जो मेरे पास आ रही है that is एक्चुअली 8, ठीक है. एक ऑल्टरनेटिव ये भी था कि मैं इधर भी मूव करता हूँ, तो अगर मैं इधर भी मूव करता हूँ और उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं इधर इस सेल पे मूव करूँ और यहाँ पे भी कॉस्ट मेरे पास 7 आ रही है, राइट. सो आई हैव टू चूज वन ऑफ दीज पाथ्स, या तो मैं ये पाथ चूज करूँ या मैं ये पाथ चूज करूँ, ठीक है. सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ रैंडम डिसीजन व्हिच आई कैन मेक, ठीक है. इस और लुक अहेड जो मैं कर रहा हूँ दैट इज ओनली वन सेल अहेड. So I'm only looking at the cost of the next cell या next node. उससे आगे मैं दो सेल्स को अगर मैं देखूं तो obviously शायद मैं फिर ये पाथ सेलेक्ट करने में मजबूर हो जाऊं कि फर्ज करें 6 में 7 पे जा रहा हूं और 7 से अगला नोड जो है वो मेरे पास यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे अगला नोड 8 आ रहा है, तो obviously if it is 2 step ahead sort of search, तो then I might select this path rather than this path. लेकिन this is one step ahead, look ahead. तो मैं एक इमीडिएट नेक्स्ट सेल की कॉस्ट देख रहा हूँ एंड आई कांट जंप फ्रॉम 2 सेल्स अहेड. तो इसलिए I'll basically be moving in this particular direction. So I'll move from this node then to this node and then to this node. अच्छा, जब मैं इस नोड पे पहुंचूंगा यहाँ पे इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो 8 है. मेरे पास जो अल्टरनेटिव पाथ है उसके ऊपर भी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो 8 है, दोनों सेम है. सो आई डोंट हैव एनी से अ बेटर नोड टू मूव टू. देयरफॉर आई विल कीप ऑन माय ट्रैक, जो कि मैंने ट्रैक यूज किया. यहाँ से the option is to move to this cell, the heuristic cost is 7 और यहाँ पे heuristic cost is 7, whereas the alternate path के ऊपर heuristic cost मेरे पास 8 आ रही है. So the path which I have just selected, वहाँ पे मेरे पास cost जो है वो कम है. So I'll keep on this present path and I'll not move to an alternate path. ठीक है. So similarly the next is 6 and then you have let's say 5 and then you have the next one is if you move in this direction that is 4 or if you move on this direction that is actually
अगेन 4, सो इन दोनों में से मेरे पास एक चॉइस है कि या मैं इधर मूव करूं या मैं इधर मूव करूं, राइट। तो दोनों की कॉस्ट जो है वो मेरे पास, इन दोनों की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो मेरे पास आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक है। सो अगेन आई कैन चूज रैंडमली, आई कैन चूज एनी ऑफ दीज टू पाथ्स रैंडमली, आई कैन चूज दिस पाथ, I can choose this path, and I can choose, obviously I can choose this path. I don't have any other information to select any path, सिर्फ heuristic cost की बेस के ऊपर कर रहा हूँ, और वो immediately next node की heuristic cost को मैं consider करते हुए ये decision ले रहा हूँ, right? So I can actually choose one of these nodes in this particular case, right? अच्छा, एक चीज इसमें, एक और चीज देखने वाली है कि अगर मैं ये फर्ज करें एक तीसरा पाथ भी था, मैं 7 से 6 पे जाता, ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ पे दोबारा 7 पे आता, विच इज सेम एज मूविंग ऑन दिस पाथ, और यहाँ से मेरे पास अब चॉइस क्या थी, फर्ज करें अब चॉइस ये थी कि यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे मैं ये एक डिसीजन लेता कि यहाँ से एक पाथ, एक कॉस्ट मेरे पास 8 है, और दूसरी कॉस्ट इस पाथ के ऊपर मेरे पास नेक्स्ट कॉस्ट जो है वो 6 है, ठीक है। So at this point in time, I could have actually switched between these two paths. So ये वाला path लेने की बजाय I could have actually switched to this path. I could have taken this path. ठीक है, so that was a possibility. ठीक है, so इन 3 possibilities में से मैं कौन सी possibility को adopt करूंगा? Whether I'll continue along this path or I might choose this path or I may select this path, ठीक है। एंड द डिसीजन दैट आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबल पाथ्स कौन से पाथ पे मैंने स्विच करना है, दैट वुड बी बेस्ड अपॉन द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड जहां पे मेरी सर्च है, ठीक है। So I can actually choose between these two paths. So let's see. So this is not A star. Remember, this is not A star. This is F equals the heuristic cost, which is heuristic cost is the Manhattan distance to the goal. And I'll just try to see कि best first search, इस केस में best first search है क्योंकि मैंने G cost इसके अंदर ऐड नहीं की, तो पाथ कौन सा चूज किया जा सकता है। As I told you, I'll just repeat, यहाँ से एक ये पाथ हो सकता है, यहाँ से एक ये पाथ हो सकता है, और यहाँ से एक ये पाथ हो सकता है, right? So these 3 paths are possible. Let's see कि ये सर्च जो है वो कौन सा पाथ चूज करती है। You can try to solve it yourself and try to see कि क्या होता है। So let's see कि यहाँ पे if you start this search, आपके पास 2 नोड्स ऐसे हैं जिन पे आप मूव कर सकते हैं और आपकी कॉस्ट ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 6 आएगी, और एक नोड ऐसा है जिसके ऊपर आप मूव करेंगे तो आपकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 8 आएगी। तो अगर आपने दोनों 6 वाले में से कोई एक चूज करना, ठीक है, ओके। सो लेट्स से कि उससे अगले स्टेप के अंदर रिमेंबर ये जो 7 आप आए हैं ये इस रूट से आए हैं, नॉट फ्रॉम थ्रू दिस रूट, आप इस रूट से आए हैं, और यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी कॉस्ट इसकी 7 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सेकंड, द थर्ड नोड, द सेकंड नोड from your start node. This is also the second node from your start node. So you have to keep this in mind कि you are not considering this path at present. आप यहाँ से 7 तक यहाँ से पहुंचे, या आप इस रूट से 7 तक पहुंचे, तो these two are the possibilities. बस इन्हीं दो, और इसको आपने अभी नहीं किया कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे इसकी पाथ कॉस्ट जो है, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है, सॉरी, वो 8 है, विच इज हायर कंपेयर टू द अदर 2 पाथ्स। हाँ, अगर खुदा ना खासा इन दोनों पाथ्स को जो के अंडर कंसिडरेशन है एट प्रेजेंट, अगर उन पाथ्स के ऊपर ह्यूरिस्टिक कॉस्ट किसी वक्त 8 क्रॉस कर जाती है, 8 से ज्यादा हो जाती है ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, तो फिर आप इस पाथ को भी कंसिडर करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अब आप ये देख लें कि द थर्ड नोड फ्रॉम योर स्टार्ट नोड, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी जो है दैट इज 8, right? And the third node from your start node along this path,
along this path. इसकी कॉस्ट जो है वो 6 है. So which path will you continue? Obviously this path आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 6 आ रही है which is less than 8. ठीक है. Okay, so and you will continue until you encounter a cost which is greater than 8 heuristic cost. Okay, so you will continue along this path. You don't have any other option क्योंकि इस पूरे पाथ के ऊपर आपकी कॉस्ट 8 से कम है, heuristic cost of the cell, and there you go, you will reach your destination, and your destination has been reached along this path, right? Along this path, and this has been calculated, this path has been calculated based upon h only, right? इसमें g cost आपने या path cost अभी आपने add नहीं की. So this is what best first search or greedy best first search would look like. Okay,